we need to talk about carboxylic acid from today's class. So let's start this with carboxylic acid. We already talked about alkanes, alkenes, and alcohol, and this is now fourth functional group or the homologous series that we need to talk about, right? So fourth homologous series, which is carboxylic acid. Carboxylic acid, right? So let's talk about this. If you talk about carboxylic acid, so you need to keep remember, first of all, the functional group of this family. This is the functional group. This is the functional group of this family. Just look at on this functional group. You just need to see this, बच्चों कि यार ये functional group में हर एक bond को आपने अलग-अलग देखना है पहले, अलग-अलग bond बनाने हैं सारे आपने, ठीक है ना? चलें, let's talk about this family. इसमें अभी आप मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है इसका वो मैं नहीं लिख रहा, मैं स्टार्ट करूंगा डिस्प्लेड फार्मूला, ठीक है ना? क्यों? आई जस्ट वांट टू डू दिस कि आप लोग खुद इसका जर्नल फार्मूला क्रिएट करो डिस्प्लेड फार्मूला से, ठीक है ना? तो जर्नल फार्मूला आपने खुद बनाना है, जर्नल फार्मूला आपने खुद बनाना है इस फैमिली का, ठीक है? दिस इज योर टास्क. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस with functional group. Just look at over there, the functional group is C double bond O and then OH. So for suppose if you have one carbon, you have a member of the homologous series carboxylic acid with one carbon. So definitely the one carbon is already present in the functional group, right? So every carbon has 4 bonds. So you can see this right now in the functional group, the carbon has 3 bonds. The 4th bond is going to be fulfilled by the hydrogen. So this is the one of the, you can say that the compound, the first compound of this homologous series. Now, if you want to write the condensed formula of this, so it would be simple. You just need to write the condensed formula is, condensed formula would be H C double bond ON, like this, C double OH, right? Or even you can write like this, H CO2H. You can even write like this, right? उसके अलावा अब आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हो. मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ यू वांट टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख सकते हैं, इसमें से देख के लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना? मैं जर्नल फार्मूला से नहीं लिख रहा हूं, जर्नल फार्मूला आप खुद बताएंगे मुझे, ठीक है? मैं इसमें से देख के लिख रहा हूं. You can see this, we have 2 hydrogens, 1 carbon and 2 oxygens. So it should be C H2O2. I'm writing from this, right? हमने इसको देखा और उसमें से देख के हमने इस तरह लिखा है, ठीक है? And what is the name for this? The name is always from prefix and suffix. So again, the carbon is 1, so the prefix is meth. You can simply say that it is meth. And for this, you need to add prefix over here as anoic acid. You need to add anoic acid over there, so it would be methanoic acid. This would be methanoic acid. And if you talk about empirical formula of this, बच्चों, so empirical formula क्या होगा इसका? It's the simplest ratio. और वो क्या हो सकता है आपके पास? This is already the simplest ratio. We cannot further divide the numbers over here. So this is the simplest ratio. Right, but if you talk about for 2 carbons, so just draw the structure of functional group first. This is the functional group, and then fulfill the bonds of carbon. 4th bond of the carbon with the carbon, right? So this is carbon, and over here each carbon has 4 bonds, so we need to complete all 4 bonds of this carbon. So it would be like this. So the condensed formula would be CH3 CO2H, and the empirical formula, you can see this now, 2 carbons over here, 4 hydrogens over here, and 2 oxygen. So the empirical formula would be CH2O. So the simplest ratio is CH2, right? And the name of this compound is ethanoic acid. It is ethanoic acid. So Bacho, can you please tell me what should be the journal formula of this family? What should be the journal formula of this family? क्या हो सकता है बच्चों? Sir, CnH2n plus 1 CO2H. अच्छा जी, आप कह रही हैं कि it should be CnH2n plus 1 and CO2H, right? यही कह रही हैं आप? Yes, sir. ओके, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन आपने याद रखना है बच्चों कि ये वाला जो जर्नल फार्मूला अभी आप बता रही हैं ना, ये 1 कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है, यानी कि इट इज नॉट ट्रू फॉर मिथानोइक एसिड, ठीक है ना? ये मिथानोइक एसिड के लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो जर्नल फार्मूला है इसके खुद के अंदर ही 2 कार्बन मौजूद है. तो आप याद है, ये जो आपने फार्मूला बताया जर्नल फार्मूला, ये जर्नल फार्मूला
it's not going to be work for methanoic acid. ये इथेनोइक एसिड से कैरी ऑन हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें ऐसा फॉर्मूला बताएं जो दोनों के लिए मतलब हर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो है परफेक्ट हो, तो वो क्या हो सकता है उसको अगर हम देखें। जी बताएं, कौन बता रहा है? CnH2nO2. Yes, you can see this. One carbon and the double of this hydrogen. Two carbons and the double of this would be hydrogen. So you can say that CnH2n, the hydrogens are always double in these two compounds. You can see this, and the oxygens are always fixed. So this is the journal formula that is valid for every carboxylic acid. All right, every one of you. Yes, बच्चों, all right. Yes, sir. चलिए तो start करें. You need to draw propanoic acid, you need to draw butanoic acid and pentanoic acid. आपने ये तीनों structures बनाने, and also you need to try for the chain isomers. आपने chain isomers बनाने की भी कोशिश करनी है butanoic acid और propanoic acid में. Just do it quickly and send me the answer so I can check कि आप लोग सही कर रहे हो या नहीं. Okay. So आप सबने होपफुली इसको बना लिया होगा. मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इसके आइसोमर्स भी बना सकते हो ब्रांच स्ट्रक्चर्स में. फॉर सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि यू कैन ड्रॉ ब्यूटेनोइक एसिड, सो ब्यूटेनोइक एसिड कैसे ड्रॉ करोगे आप लोग? ब्यूटेनोइक एसिड के लिए यू शुड हैव 4 कार्बन्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू ड्रॉ द फंक्शनल ग्रुप. पहले फंक्शनल ग्रुप बना लो एंड देन यू कैन अटैच द रेस्ट ऑफ द कार्बन्स और फिर उनकी वैलेंसीज कंप्लीट कर दो. तो दिस इज व्हाट ब्यूटेनोइक एसिड. और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला you should have C4H8O2. This should be the molecular formula of this. अब देखें, इसी को आप ब्रांच फॉर्म में भी बना सकते हैं. Just write down the 4 carbons along with the functional group, right? अब इसमें से कोई भी एक कार्बन आप जो है रिमूव कर सकते हो. जैसे ये वाला मैं रिमूव कर रहा हूँ और उसको मैं सेंटर लगा रहा हूँ, ठीक है ना. So this can be the branch structure of butanoic acid, right? अब देखें इसके आप हाइड्रोजन कंप्लीट कर दें, 4 बॉन्ड्स हो गए इसके पूरे, ठीक है ना. इसके आप हाइड्रोजन पूरे कर दो, इसके हो गए 4 बॉन्ड्स पूरे, और इसके हाइड्रोजन आप पूरे कर दो, ये हो गया 4 बॉन्ड्स पूरे. तो दिस इज व्हाट ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. दिस इज व्हाट ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. मैंने ये सिर्फ आपको इसलिए बनाने के लिए दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार मैंने ब्रांच बनाना सीख लिया, ठीक है ना. अदरवाइज इसके नाम वाम रखने की जरूरत नहीं है. अगर आप चाहें तो नाम रख सकते हैं इसका, लेकिन इसका नाम रखने की जरूरत नहीं है. और if you want to name this, so you can name like this कि भाई आपके पास 3 कार्बन है और जहाँ फंक्शनल ग्रुप करीब है उसको हम फर्स्ट पोजीशन कंसीडर करेंगे. So this would be 2-methyl propanoic acid. You can name this like in this way, but we don't need to consider this naming ना, हमें इसकी जरूरत नहीं है. लेकिन आपको याद रखना है बच्चों कि आपके पास ब्रांच स्ट्रक्चर्स इससे बोलते हैं. इस तरह की चीज आपको आनी चाहिए क्योंकि पेपर में स्ट्रक्चर बने हुए आ जाते हैं, एमसीक्यूज बने, आपके पास आइसोमर्स की बातें वो पूछ लेता है. सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट. उसके बारे में आपको रेडी रहना है. इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? ऑल फाइन? Yes. चलें, if you talk about their physical properties, so you need to know that कि भाई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से हो सकती हैं आपके पास. फिजिकल प्रॉपर्टीज में मोस्ट ऑफ देम आर लाइक इन द लिक्विड स्टेट. ये आपके पास जो होते हैं ये लिक्विड स्टेट में भी होते हैं मौजूद ना. तो यू नीड टू कीप रिमेंबर दे एग्जिस्ट एज अ लिक्विड स्टेट. दे एग्जिस्ट एज लिक्विड, ठीक है ना. ये लिक्विड में मौजूद होते हैं. उसके अलावा अगर आप इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा, ठीक है ना. इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रेटर होगा किससे? अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्कोहल्स. So you can say that definitely they are covalent compounds, so they have low melting and boiling points. Boiling point की बात कर लेते हैं, melting point in liquid है तो boiling point की बात कर लेते हैं. They have low boiling point but greater than others, greater than alkanes, alkenes, right? और उसके अलावा alcohols. तो इन सबसे ज्यादा होगा. अदरवाइज आपके पास होगा नॉर्मली कमी क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है. उसके अलावा यू कैन से दैट दे आर conductor of electricity. They are good conductors of electricity. Right? And having short chains, for suppose 2 कार्बन वाला या 3 कार्बन वाला
they are soluble in water, right? They are soluble in water. जब तक इनकी चेन कम है तब तक they are soluble in water. बस इतना काफी है फिलहाल. और इससे अगर आप जाएंगे आगे तो you can understand that when the number of carbon increases in the chain, the solubility decreases. ठीक है ना, वो एक अलग कहानी, क्योंकि उसके अंदर कार्बन की चेन इंक्रीज हो रही है, और कार्बन की जो चेन है वो जो आप समझ लें कोवेलेंट पार्ट है, और जो कोवेलेंट पार्ट जब इंक्रीज हो रहा है मॉलिक्यूल में तो आपके पास सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है. जब तक C डबल बॉन्ड O और OH मौजूद है उसमें पार्शियल चार्जेस मौजूद है, वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है. लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं उसकी आहिस्ता आहिस्ता सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. ठीक है, तो यू कैन से दैट फॉर शॉर्टर चेन्स यू कैन से लाइक दिस, फॉर शॉर्टर चेन्स. ठीक है भाई बच्चों, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, so let's move on towards the next thing, which are chemical properties. Chemical properties of carboxylic acid. If you talk about chemical properties of carboxylic acid, bacho, so you can say that the first one that you need to talk about is that they are weak acids. You need to keep remember this, that they are weak acid, and you need to know the definition of acid and weak acid. You can say that acids that dissociate partially, you can say that acids that dissociate partially are weak acid. They are termed as weak acid. जो भी acid आपके पास partially dissociate होगा वो आपके पास weak acid कहलाएगा. और you can even say that acids are proton donor, so the substance that donate proton partially, right? You can even say that substance that donates proton partially. You can even say in this way कि भाई प्रोटॉन डोनर होते हैं आपके पास एसिड्स, तो इसने पार्शियली डोनेट किया होगा फॉर सपोज ना, तो ये वीक एसिड कंसीडर किया जाएगा. You can see this for suppose if you talk about their dissociation. So carboxylic acid is like this. For suppose this is ethanoic acid you have. When we dissolve them into the water, it will dissociate into CH3COO and also H positive ion, right? H positive ion over here. Just look at over there. आपके पास जो CH3COO है वो अलग हो जाएगा और H positive ion आपके पास अलग हो जाएगा. ठीक है बेटे? Is that clear, every one of you? Yes, sir. ठीक है, ये डिसोसिएशन है आपके पास. अब जब क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर रखता है, कोई सा भी सब्सटेंस, मिथानोइक एसिड हो या आपके पास इथानोइक एसिड हो या ब्यूटानोइक एसिड हो, क्योंकि वो एसिडिक बिहेवियर रखते हैं, so definitely they will have acidic properties as well. So as we know that कि भाई एसिड मेटल के साथ मिलता है तो आपके पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड विद मेटल्स, राइट? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसमें भी ये आएगा आपके पास. यू नीड टू नो दैट व्हेनेवर एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल they are always going to form salts along with hydrogen gas, right? So right now, for suppose I am taking example of CH3COOH. This is ethanoic acid and I am adding sodium in this, right? You need to keep remember that the last hydrogen is going to be eliminated and the rest of the molecule will be together, और उसका जो anion का चार्ज होगा वो कितना होगा, -1 ना. तो इसका चार्ज कितना है आप देख सकते हैं, जो रेस्ट ऑफ द आइन है आपके पास वो -1 बन रहा है, और सोडियम क्योंकि ग्रुप 1 का है तो इसका चार्ज +1 होता है, तो इसके ऊपर जो बनेगा सॉल्ट वो क्या होगा, CH3COONA along with हाइड्रोजन गैस. उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबके साथ 2 लगा सकते हैं, राइट बच्चों? Yes, sir. ठीक है. इसी तरह अगर फॉर सपोज इफ यू हैव एनी अदर मेटल लाइक मैग्नीशियम होता है आपके पास, मैग्नीशियम इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 2, सो इट हैज अ +2 चार्ज. इसके पास चार्ज कैसा होता है, 2+ का चार्ज होता है, तो डेफिनेटली इसका चार्ज जब 2+ है तो आपके पास इसका जो फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि आप देखें मैग्नीशियम और जब इथेनोएट आयन आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो द कंपाउंड वुड बी लाइक दिस, सो इट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड.
And also you need to know the names of these compounds. This is sodium ethanoate. You can name this as sodium ethanoate, and this is actually magnesium ethanoate. ठीक है बच्चों? चलें, आप जल्दी से मुझे इक्वेशंस लिख के दिखा दीजिए अगर आपके पास हो CH3 CH2 COOH and you're making a reaction of this with potassium, and if you have CH3 CH2 CH2 COOH and you are making a reaction with ammonium and also reaction with calcium. ये calcium वाला reaction पेपर में साथ आता है, तो जल्दी से ये तीन reactions मुझे आप लोग लिख कर दिखाइए quickly. Okay, so I'm writing the equations of these over here. You just need to keep remember कि आपने भाई करना क्या है, आपने सिर्फ हाइड्रोजन हटाकर सॉल्ट बनाना है, and you need to keep remember कि जब कभी भी कोई भी एसिड और मेटल मिलेंगे हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी. So it would be CH3 CH2 COOK because potassium is from group number 1 and also hydrogen gas along with it. And if you talk about this one, so because of the ammonium is from group number 3, so it has +3 charge. So it would be like this. It should be 3 along with ammonium and then hydrogen gas. And calcium is from group number 2, so it should be CH3, CH2, COO2, and Ca plus hydrogen gas. And in case of balancing, you can write 2 over here with all of them. And if you talk about the second one, which is the more important to balance, right? Just look at over here. This is the odd number you have, right? Just write 2 over here to make it an even. 2 3 is 6, and then you can write 6 over here. So this would release 6 hydrogens, and this will be 3 to the 6 hydrogens. And you can see this 2 ammoniums over there in the molecule on the product, and you can write 2 over here. And for the balancing of this one, you can write just 2 over here. The very important thing to remember, bacho, is you can see this one having hydrogen gas, this one having hydrogen gas. First of all, you can remember the observation of this reaction. If the examiner is asking for the observation of this reaction, so you can say that a colorless gas fizzes. You can say that a colorless gas fizzes. You can say that a colorless gas fizzes. This is the best observation for this reaction, right? And also you need to keep remember, if they ask for the test for this gas, you need to know this, that what stats we need to place a glowing, we need to place a light and splend near the gas. Place a light and splend. Place a light and splend near the gas. So what would be the observation of this? This is hydrogen gas. So we know that light and splend extinguish with a pop-up sound. It would extinguish with a pop-up sound. It would extinguish with a pop-up sound. Right, bacho? Yes. Any problem to any one of you? No, sir. Okay, so this is what you need to understand about the property number 1 and property number 2 of carboxylic acid. We will discuss the rest of the properties in the tomorrow's class, and then inshallah carboxylic acid is also going to be added. Okay, every one of you, just take yourself. We'll see you again in the next class, inshallah.